Hello everyone, whoever are joining in right now. I'll be waiting for some more time. रवि रवि का तो आ गया बिग फैन सर. So hello, and I just wanted to have a good test stream today so that we can see how this goes. है ना, मैं थोड़ा अपना सेटअप भी बीच बीच में हल्का हल्का सही करता रहूँगा डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स गोइंग. एक बार ज़रा बता दो इफ़ वॉइस इज़ ओके, कैमरा इज़ ओके एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब नो इश्यूज़ एट ऑल. चहल अनुभव रवि भाई तुम बिग फैन करके यार अभी बनने तो दे यार, पहले थोड़ा बड़ा बन तो जाए फिर तो बिग फैन का पॉइंट भी बने यार. ऐसे क्या बोल रहे हो भाई. सो हाँ, एक बार यार ये बता दो कितना डीले है, मेरे को वो भी समझ आ जाएगा. एवरीथिंग फाइन, साउंड, वीडियो वीडियो एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट. एक तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मैंने अपने फ़ोन को एज अ कैमरा सेटअप कर लिया है. मेरे पास 2 स्क्रीन्स हैं आज काम करने के लिए, तो मज़ा आने वाला है आज. इन हाउस यूट्यूबर, अरे सिर्फ इन हाउस नहीं ना, और आगे बढ़ेंगे. कितना डिले पड़ रहा है वैसे, और अच्छा इतना डिले है. ठीक है ठीक है, तो तुमको भी समझ आया होगा चहल, मैंने तुम्हारा मैसेज जैसे ही मुझे दिखा मैंने पढ़ा है, तो तुमको भी समझ आ रहा है कि डिले कितना है. अरे कुमार आयुष क्या हाल है. तो यार सुन लूँ क्या मैं भी कितना चल रहा है डिले, देखेंगे डिले कितना आ रहा है. इसको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी लाइव स्ट्रीम करंटली क्या चल रही है, रिलोड करने दो. टेस्ट स्ट्रीम खोल के तो देखते हैं. ठीक है, हाँ कंट्रोल रूम में देखेंगे ना. गॉट इट. अनुभव जायसवाल, क्या मैं अटक गया हूँ क्या, क्या हुआ है. यस एवरीथिंग इज़ फाइन डूड, नाइस. फिक्स योर साउंड अ लिटिल बिट, यू आर ऑडिबल बट सम स्ट्रेंज नॉइस इज़ कमिंग. स्ट्रेंज नॉइस मतलब कैसी भैया, पहले लाइव स्ट्रीम करते थे क्या. नहीं यार, मैं पहले लाइव स्ट्रीम नहीं करता था, ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम है. मैं पता नहीं भाई, जाए तो ठीक जाए. मेरा मेरी इच्छा तो है कि अच्छा जाए, एंड अब से हम हर वीक करेंगे. ठीक है, एवरी वीक. तो देखें ना यार कितना डिले पड़ रहा है. अच्छा स्टैटिक नॉइज़ कह रहे हो क्या रवि. स्टैटिक नॉइज़ कह रहे थे क्या, रुक जा. स्टैटिक नॉइज़ का देखना पड़ेगा मैं कैसे सही करता हूँ उसको. इसकी वजह से आ रही है क्या, हटा दिया तो. स्टैटिक नॉइज़ मैं सही करता हूँ. कैसे इस कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, अभी भी गया नहीं है. कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ना. ठीक है, स्टैटिक नॉइज़ आई विल फिक्स इट नेक्स्ट टाइम. ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर लो उसको. अच्छा इनमें अभी मेरे को तुम लोग ये बताओ फटाफट से कि हाँ 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 स्टैटिक नॉइज़ है ना. मुझे फटाक से ये बताओ कि ये क्या कहते हैं, तुम लोग में से आई थिंक तुम सारों ने अटेंड, रवि ने नहीं किया था शायद, पर आई थिंक कुमार ने किया, अनुभव तो कर ही रहा था. जो डिस्कॉर्ड पे हम सेशंस रख रहे थे वो वाले सेशंस किस किस ने अटेंड किए हैं अभी. मतलब तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट. बाकी जिन्होंने नहीं किए हैं वो बताओ ज़रा फटाक से.
नहीं किया फटाक से बताओ. अरे रिमी, अरे रिमी भी आ गई. नाइस. बताओ बताओ. ओनली वन आई हैव अटेंडेड एंड इट वाज अमेजिंग. अरे थैंक यू थैंक यू. चलो ठीक है. तो जो लोग बाद में भी ये वीडियोस देख रहे होंगे उन लोगों के लिए भी स्टैटिक नॉइज़ के लिए तो सबसे पहले मैं सॉरी बोल रहा हूँ अभी. आज ये एक वीडियो के लिए झेल लो. नेक्स्ट वीडियो से आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि वो नहीं आएगी. तो बट अदर देन दैट लेट्स आई थिंक स्टैटिक का ये कर सकता हूँ क्या मैं थोड़ा सा इसको देखना. तो अभी स्टैटिक चली गई क्या? आई थिंक अभी चली जानी चाहिए. हाँ ये है. मेरी अपनी वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई होगी अभी बट स्टिल ऑडिबल है एंड अब स्टैटिक नहीं आ रही होगी. क्या बोल रहे हैं? अरे यार इतने लंबे लंबे पॉजेज मेरे को अच्छे नहीं लगते. हाँ 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 स्टैटिक नहीं आ रही. गुड. वी फिक्स्ड इट. वेरी गुड. ये भी एक चीज़ है ना. तुम लोग को एक चीज़ और दिखाऊं जो मेरे को फ़िलहाल तो परेशान कर रही है. पर ये देखो. तो पर ये चीज़ मेरे को परेशान कर रही है. अभी मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है. ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है जो इसका वो था ना इफ़ेक्ट आया जो. मैं इसको भी फिक्स करना है मुझे अभी. पर ये एप्पल का बेसिकली वो है कि हाँ. Anyways, coming back to the topic, and what I was trying to say is कि what we'll be doing here in this session, in this series, complete series, is we will build a website. Now, this website will be for your own specific needs. ठीक है. तो तुम्हारे ऊपर it is completely on you guys, whatever you want to do with it, है ना. however you want to change it, customize it, completely on yours. मैं क्या करूँगा यहाँ पे what I will be doing here is what I'll help you guys understand topics and I'll help you guys. I'll be a bit more hands on this time. ठीक है. Discord पे I remember it was a bit less on my part and more on your part. वो भी मुझे समझ आने लगा था. That's why I had to मतलब that I understood after I stopped the sessions on Discord. So that's when I got to know कि okay, you guys need some more help in these terms, so that like not exactly in terms of development but you guys need some help in terms of motivation and push कि hey do this, please do this, do this. So that you stay on track and you do it. So what we'll be doing is I'll show you guys one website for now. Wait. So actually the time that I was off and I was not taking Discord sessions, that was the time that I did this. Not exactly this, but let me come here. Yes. So this is what I did the time I was not taking sessions on Discord. So I built my own portfolio website. You guys can check it out on rishibhalla.me. That's my name, spelled out the usual spelling, BHALLA Bhalla, Rishi RISHI. So rishibhalla.me is the website. You guys can check it out. I am still developing it and I would love some feedback, good feedback, bad feedback, anything at all. I take everything in a positive way. सो गाली भी देना है दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इग्नोर कर दूंगा अच्छे से. तो बेसिकली what I did was I tried to make this a bit subtle, not very flashy and all. I saw that today I was going to ask for the code. Don't worry रवि, कोड मत पूछना, तुम ये खुद अपने आप से अपने लिए बनाना. ठीक है. सो एक तो चीज़ मैं पहले बता दूँ. आई विल से दिस फर्स्ट. दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल डिज़ाइन. ठीक है. आई एम नॉट अ वेरी गुड डिज़ाइनर. I can't design very well. So I took inspirations from various places online, and this is what I could come up with. And I actually love the aesthetic feel of it, and that's why I finalized it. So
for people who don't know me, for abhi to chalo jo whoever are here, I think most of them are in actually already in AWS cloud community, so they know me. But those who don't know me and those who are watching this video later on, I'll tell you something about myself. My name is Rishi Bhalla. You can see me on the web screen as well. I'm in your screens now. So I actually go by the name Logic, and the one purpose in life that I have taken uh, is to find logic wherever it's needed. So that's the tagline I go by, that you can see in the top left hand side, which is logic kahan hai. That's something that you'll hear me say a lot of times. And now that we are really connected online, I think it'll be a lot of times now. So I'm a full stack web and app developer. My main stacks, as you can see on my website, are the MERN stack, which is Mongo, Express, React, and Node. And for applications, I'm very fluent in Kotlin, Java, Flutter, and React Native. And I'll be adding more stacks to this, as in terms of databases, or what do you say, like cloud providers. I am very familiar with AWS, somewhat in GCP, and I have not really touched Azure, but I am planning on doing that soon. So basically, and what I'm trying to convince you guys here is that I may be a person that is just like your elder brother, that knows a bit more, has some experience, and all those you guys who are coming in, and you want to start something new here. uh, I believe I can help you guys take this journey on, and at least I can give you the first initial steps, and I would love to see you all run way ahead than where I am right now. And I would love to learn new things from you guys as well. Please show your synergetic strangers hackathon team portfolio. अच्छा, ओके, ये तुमको कहाँ से आया? तुमने कहीं देखा है क्या अनुभव इसको? सिनर्जेटिक स्ट्रेंजर्स वाला पोर्टफोलियो तुमने पहले कभी देखा था क्या? तुम तो अभी ज्वाइन किए ना, तुमको कहाँ से पता चल गया कि टीम थी हमारी? ये पर आई डोंट हैव द पोर्टफोलियो राइट नाउ ऑन माई सिस्टम. इट्स इन माई हार्ड ड्राइव स्टोर्ड. सो अभी के अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट ठीक है, आई विल डेफिनेटली शो यू गाइज दैट ऑल्सो, कि वेयर डिड आई लाइक माई टीम started like in college. Where did we start? That was our first hackathon, which Anubhav is referring. Synergetic Strangers were the ex-community lead of AWS LPU, which is Vedant Gaidhane, Gurjot Singh, the current web dev lead of AWS LPU, and myself, the tech lead of AWS LPU, Rishi Bhalla. So we three together built that website in 24 hours, and that was a starting point. And it was a pretty basic website. It did not have much functionality, but yeah, I definitely have come a long way from that, and I would definitely share that website with you guys as well. I would love to. In fact, I think that should be the first thing we do tomorrow when we start the series actually, so I can show you okay, this is where I started and this is where I am right now, so that you can gauge do you actually want to continue the sessions with me or not. So coming back to what we are going to do in these sessions is, I'll help you guys build this portfolio. I will not share the code directly. Okay, you will have the access to the code because this code is already available on my GitHub profile. You can visit my website, or you can directly search logic kahan hai on GitHub, and you can check the code out on my GitHub profile. The front end and the back end code are two separate repositories on my GitHub profile. So the code is actually available to you. I would actually go out of the way and suggest ki do not directly copy the code, because you won't be able to understand it immediately, right? So because this was a big project for me, like a big project as in I tried to, this is a singular website that you're seeing right now, but the project, if I talk about it as a whole, is not just this one website. It's actually this too. I'm sorry. Yeah, it's actually this too. So what you're seeing right now here is the admin version, the admin side of the same website. So this is where I control the content. Now, this is what I was trying to tell you about earlier, that me as a person, or me as a developer, I have two qualities. One is I have the absolute
pure passion for development. I love it. I cannot live without development. So that's one pure passion that I have. Other than that, the other thing, the second point that I have is I am extremely lazy. So some people think that it's kind of countering each other, but that's not how it happens in my head. Basically, when I say I'm lazy, what I try to do is every time that I am given a task that is way boring, or it's monotonous, or it's just a repetitive task, that's where my mind starts running, and I try to think of a way to automate it completely. Like, I don't have to interfere at all, and I love the process of making the automation, and then I enjoy my task. Okay, now I have to just sit and relax, and the bot or the automation script or whatever I have built will do the task for me. So an example for this is so I'll just take one thing. So in the last AWS meet, those of you who are not in AWS right now, bro, I've been following you since I came to LP. Acha, अनुभव, अरे बाप रे. Okay, okay. This I did not know. Huh. So okay. So as I was saying, yeah. So this task was given to Ravi, and not exactly this task, but a task was given to Ravi and Shashank, who are currently in the AWS community. People who are from outside, I'm telling this to you guys. I think the inside people, everybody knows this task, which was for them to share memes and make people laugh. So this is one thing that we try to do in the community. We try to keep a very fun, loving environment, and that's what we try to divide these tasks and increase the synergy between the whole, like between the team. So this task was given to Ravi and Shashank, and they have been doing it. They have been doing a very, very fabulous job. They all have very like they have such good memes that they share every day on the groups. But that's one thing where my mind started ki, maybe it's a task to share memes every time, and find meme, share meme, find meme, share meme. So what I tried to do, and I think I think I got the idea from Ravi himself, which was he suggested the idea that what if I create a bot for it, and I was like, why not do it? So that another like one more project, and you guys can see it on the screen as well right now, or on my website. This is how I plan to navigate my website, that I'll be posting about my projects. So if any of you really want to know what goes on inside my head when I develop these projects, or when I develop anything at all, you guys can come to my portfolio, check my projects, the projects that I'm currently working on, and you guys can see exactly what what I'm doing at that time, while I'm adding a new feature, or facing some bugs or some issues, and how do I solve it, what do I think, what do I do. I try to be as real as possible. Now I can't actually type each and every thought that I have in my head, but yeah, I try to give a gist of what is going on exactly inside my head. So if you guys can see right here, so I actually had a problem, not exactly a problem, but this is a feature that I wanted to implement, like the edit feature. So I actually explain how I did it, what did I do, what did I first do, how did I think, and how did I go about actually implementing it, right? So all of this I try to document, and all my different thoughts, how about this, exploring this, different explorations, I tried to document all of them this in this website and this blog system. It's not exactly a blog, it's a project journey, I would say, and that's what I call it. These are my project journeys, and I will add a separate section for blogs very soon as I start writing some. For now, I'm polishing my writing skills here, because here I can be informal. For blogs, definitely I'll have proper formal language, and I have proper research, and then I'll start writing blogs. So I'm waiting a bit more to gain some more experience, and then I'll start adding blogs to my website as well. But as you can see, so this is what goes on in my head, and I have also added screenshots and everything. So the one problem which I know I have added
is that these screenshots are sometimes visible and sometimes they're not visible. It depends on how Google is managing my request, because I try to do something sneaky here. I did not want to use any of my own storage, or as in not exactly my storage, but I didn't want to pay for it. So I wanted to use my own free storage. So I had a new Google account created for it, and I got the 15 GBs of drive storage, and I'm trying to link it from there. So the sneaky way, Google has been trying to tackle that, I think, for about 2 years now. I'm still not sure if they were trying to tackle it before that also, but I remember 2 years back I was doing the same thing, and they stopped the method that I used that time. And now 2 years after that, I am still doing the same thing, but a different method, different URL endpoint to hit at, and I am still facing some errors right now. So this is again what I have mentioned. I think I have mentioned it. No, this is another issue, but yeah. So in my planning for V2, I mentioned this. What I'll be planning, what I'm trying to implement next in this. And you can see the third point here is that I'm trying to update the way the images are stored and used, and I'm trying to change the thing from Google Drive to something else. So I'll show you guys what we'll be building. So this is okay. Matlab, this as if you see it just as this much, it's a normal website, right? But what if I told you that I'm lazy and I don't want to build these things, from scratch. So what do I do if I want to add another point or another instance that I want to add to this? So how should I do it? What do you think? I am lazy. So what did I do? I'm lazy, but I'm also hardworking in this sense. What I did was, I actually went out of the way to understand how Markdown works. Markdown, if you guys don't know, it's the readme.md file that you might have seen in every GitHub repository that has a good, it's like code, but when you preview it or when you save that code and you look at it from a Markdown editor or Markdown reader, if it supports Markdown files, you will be able to see formatted code. So what you can do is, there are some specific character types, not character types, I'm sorry. So there is some specific characters that you can use, like in WhatsApp, if you have stars, asterisks, like the shift 8, around two words or around words, if two asterisks are there around words, the part in the between those two asterisks becomes bold. If you have two underscores, it becomes italic, right? So that's something similar to Markdown. The code is different, as in for bold I'll need to add two asterisks on each side, and for if I add a single asterisk, it's italics, and if I add underscores, it's I think again it's italics, yeah, not underline. So I understood how Markdown works. I tried to look for solutions that involve Markdown, and I found that there's a very good repository, a very good package called React Markdown, and that's what I've been using here. So okay, yeah, this is an issue on my end. Just give me a second. So this is also something that I'll show you right now. I built this script for me that I'll host this website locally. I won't host it online, right? I'll host this website locally, and now you can see. So this is the editor right now. So if I can show you, if I have a hash and a space and I write hello, that converts into an h1 tag. So HTML elements are also supported here. This is what I mean by making tasks easy. Now I don't have to write pages for my project journeys or edit pages for my project journeys again and again, and then push the code to GitHub and then go into my EC2 instance and pull the code and then rebuild the code, and then it will be deployed just for one single change where I say hello, right? Yeah, so this is one thing that I did. And
so here I can directly add content, write this, or I can edit my previous content, whichever I have added. So this is something that I have been doing these days, and this is how I can do it. And this is exactly what I'll help you guys build, so that it becomes really, really easy for you guys to add content, to edit it, to delete content if you want. And basically this thing means ki if you give time to build a portfolio website, am I missing any chats or anything? Bhaiya, try Cloudinary. अच्छा Cloudinary क्या होता है देखेंगे इस पे, एक मिनट. Cloudinary किस लिए है, मतलब I think I missed the chat earlier. On what point were you trying to say what is Cloudinary? Till he replies, I'll come back and I'll complete the point. So I'll be helping you guys to build this exact thing. So not exact, matlab you guys have the option to Anubhav, so which languages did I use? It's Mern stack, ठीक है, Mongo, Express for backend, React with TypeScript for the frontend, and Node तो चलो Node, and Cloudinary for storage. अच्छा ठीक है, okay रवि, I'll definitely check that out. अभी तो मेरे पास एक दूसरा थोड़ा सा आइडिया था एंड वो मेरे को करना था, वो भी डिस्कस करेंगे इस पे. तो Cloudinary भी एक मैं याद रखूँगा, I'll keep a note of it, ठीक है, एंड विल डिस्कस दैट ऑल्सो. सो वेयर वाज आई, हाँ, तो विल बी बिल्डिंग दिस वेबसाइट, ठीक है, विल बी बिल्डिंग द बैक एंड, विल बी बिल्डिंग द एडमिन पार्ट ऑफ इट, विल बी एडिंग different features like subscription, we'll be adding comment section, we'll be adding all these different features. And you guys, it's your creativity is the limit. Whatever you guys want, I'll make sure to leave you guys at this at a level where whatever you guys think, you'll be able to make it a reality, right? So I actually just now looked at my screen and I forgot. I was about to tell you guys about the meme task that we had for Ravi and Shashank. So when he said why not create a bot, what I did was I'm sorry, yeah, so when we had that task, what I did was phone का आवाज तो नहीं आया ना मेरा तुमको? फोन में चलो मैं बाद में देख लूँगा. तो या सो जो उनको टास्क मिला एंड दे वर अबाउट टू क्रिएट अ बॉट, व्हाट वी डिड देयर वाज, लेट्स गो टू दिस. यप, सो लेट्स कम टू दिस. I created a Discord bot and I'll soon add it to the AWS Cloud Community ka Discord page. We'll add it soon. I was just trying to get a bit of what do you say? Okay. I'm trying to just test it out a bit. Okay, I'll show you guys the working of it for now. So basically, I created this in. कहाँ गया? अच्छा ये I had to do a lot of this. Yeah. So if I show you my Discord, you should be able to. भाग गया. हाँ. So this is my server, and do not judge me by this image. I'm really sorry. It's not my fault. As you can see, the bot is still in development. And क्या इमेज दिख गई भाई सामने? नहीं यार, पता है वो इमेज को देख के मैंने ये चीज़ ऐड की थी कि कुछ भी आ सकता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको. And that's why I added the feedback command, so that I can get some feedback on it, and I can get feedbacks on as to which subreddits we can use. So I tried to keep it very simple. Simple task was send memes, and I want a meme. I hope it does not give me anything wrong right now. Please. See, I exactly wanted this. Programmer humor जैसे था. I had two subreddits in mind, which was I think dev humor and programmer humor.
ये दो वेबसाइट्स थी, दो सबरेडिट्स थी. And because वो दो subreddits are not that active, memes were getting repeated. So I had to add some more. So I added dank memes to the list. I added, I think, funny to the list. There is a 2-3 more subreddits ka list. But because they go away from development, I thought I'll fix it. I'll add as many development based servers, Reddit places in that, and then I'll send the thing here. This was one task. This I completed in, I think, 2-3 hours, 4 hours max. Tested, done. ठीक है, खत्म. My mind did not stop here because I got an idea. If you guys don't know, I am subscribed. Like, if you guys don't know about this, not just me, there is a subscription feature, like a subscription thing, free subscription for emails from TLDR. There's a thing called TLDR. The full form is too long, didn't read. So what TLDR does is, there's a thing called TLDR newsletter. You subscribe to the newsletter, you select the topics that you want, and every day they send you news articles about the latest developments in that field. So you can select AI, you can select web dev, you can select crypto, or I said AI before, anything like design, startups, and just general tech news. So all of this you can do. So I thought I had to go again and again and read those emails. Okay, I have to look for them in my endless email things because I have signed up for so many different things on that email that it gets lost. So what I did was, now as I said, I had a new email ID for my portfolio website. I added subscriptions from TLDR to that, and now if you just write enlighten me, a very apt name for the command, because it enlightens you with the new latest trends going on in the tech world. And I'll soon add support for a particular field that you can search for, like if you only want AI news, or if you only want web dev news. For now, it gives me randomly. It chooses one topic randomly and then it fetches the news for that. So if I write, as you can see, it's boarding the flight, it's taking off, going to the place, gathering the news, on the way back, almost there, it's back, and here we have our news. So I have news from AI. That's the latest news. This is the news from today. So this is today's news. It's latest. We also have links. So what it does is, if I'll show you the email as well. So what happens here is, here it is, right? So I'll come to this scene. Yeah, so you can see here, this is the email ID, right? So you can see all these TLDR, marketing, AI, infosec. See, all these are different topics that you can choose from, right? So we can see just now it chose AI, right? And in AI, in headlines and launches, you can see there is Mistral's new model. So this is the random news that it chose to give us, right? So this is the whole email that it has, the whole thing that you can see. So this is the whole email that it has access to. It goes, reads this email, extracts content out, right? So it uses that headline, uses the content that is given. I actually took I took a whole day to properly extract content, because that's the most tricky part. It's not tricky to create these embeds and everything. If you guys can see right here, right? So all this embedding and all this mapping of content to the link and everything, not at all a difficult task. It's just 2 minutes. But the main task here was that we had to go search the email, extract content properly, because I cannot mess this up. If this gets messed up, everything is gone. So this, bringing to this, was a very I'll say a difficult task even for me. I learned a lot of things, a lot of different things about regex patterns and whatnot. So that's one thing I learned from that, and I'll definitely add it. If you guys can see that I have the what do you say,
the project. I have added the project. Yeah. Where is it? Sorry. Yeah. So I have added the project in the project section, meme board for Discord, and I will be adding content here as to what I did and what I did not do, and what I did wrong initially. I have it all written in my notebook, how I was going through that. So I'll just add it there. But yeah, so this is what it does, and if and just to add a bit more personal touch to it, I added the feedback section, because this is the part I love about my development most, because I love to have some feedback system mechanism, something like that, so that I can have a personal connect with people. That's the thing I really like. I'm really sorry you guys are not on the live scene. I am also learning this. So yeah, so the feedback command right here, and if I can just add, I am a feedback from the live stream. So if I just add this, you can see feedback has been sent, and you can see I have a new notification. If I come back, the meme wala exactly has okay, you can go send me the feedback. This was the content, sent by whom, where was it sent, and if I want to reply to them, I am getting this ID for now, because I'll be using some kind of a reply mechanism as well. So the bot will go and reply to them either in the DMs or in the server itself. So I have the server also with me, and I have their ID as well. So I'll decide what to do, how to respond to a feedback, because once I make this bot public, I will not know where it goes, what it does. So I'll be getting feedbacks from various random places, right? So I have to make a way to respond to them, right? So I'll try to see what happens. And this feedback system I just completed last night, and today the whole day I was not exactly doing something. I just took this as a rest day and preparing for this particular stream, which I was very excited about. So all of this, I think, will spark some interest in you guys. I'm pretty sure it will, because if you guys are right now listening to this, people who are watching the VOD, the video on demand, after this live stream ends, if you're still here watching till this minute, it's been 47 minutes. If you're still here, then I'm definitely sure you are very, very interested as to what we are going to do. And I promise you, I will not let the enthusiasm and the experience down. That's one thing that I can promise, and I'll try to keep it as fun, as engaging as possible. And for that, I'll need your help, because see, I am okay streaming for even a single person, but that person has to be attentive while he's on the stream or she's on the stream, right? So the only thing I want from you guys is be active in the chat. I love reading what you guys are thinking right now, and talking to me directly. And let's actually make this a very good series, right? I'm hoping this would go very well. Tomorrow at 7 we'll have this really sorry, not 7. It's actually all at 3 tomorrow at 3, that is Sunday at 3. We'll have the session again. Tomorrow we'll start with this project, not Discord, but we'll start with the what do you say, the website project. So this is the website project basically, and I'll also teach you how to automate deployments and everything, right? So basically what I'm trying to tell you guys here since the start is, I'll teach you guys how to actually automate stuff to a level where you have to work the least for a singular project. Once you deploy the first version, right, that should be the hardest part of the project, because after that it's only adding a new feature one by one. So that should not take up the time of like how you developed and published the first version. You had to put in a lot of many hours, only like just after you're done writing the code, to
publishing the output, you had to spend at least a day or two to properly, migrate your code from your end to GitHub, then to the instance or whatnot. If you haven't done it yet, this is how it happens. हाँ अनुभव, डोंट वरी एट ऑल, मैं बता रहा हूँ ना, आई विल टीच यू गाइज टू दिस लेवल दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आफ्टर दिस सिंगुलर प्रोजेक्ट, you already know how to build websites. You will be able to host these websites. You'll understand how AWS works. Like, then you can make it into anything that you want. I'll ask you guys to be ready to bear a minimal charge of at max I think 50 to 100 rupees per month. ठीक है, once you guys host it, because that will be the hosting cost. ठीक है, domain I can get you guys for free. That not even I am not required for that. You will get it through your GitHub account. What about security? In case we publish some website and receive data and all. So yes, okay. This is one part where I have also not touched yet, and I am very excited to go ahead with this. Now, because this was one thing I also wanted to start. For that, I needed to build a website, at least host it, and understand how AWS works. Right, that's what I did with my portfolio project, and that's what I'll help you guys with your portfolio projects as well. At the same time, I'll be adding more features to my own website. So here comes the thing. Now I'll be collecting emails from people for say subscription features. Like if I add a new update to my project, if anybody's interested to continue the project with me, as they are also building it side by side. If they want to continue it with me and they want updates or like a notification or something, I'll add a subscription kind of a model in the website as well. So for that, now when I'll be collecting emails, that is when I'll also dig in deep about security and how to store those, not making things very weird. Maybe I'll need to add account, like a user authentication system as well. But I don't think I'll be adding an authentication system because it's a portfolio website of mine. It's not a service website or a product based website. It's showcasing me. So I won't have any accounts. I'll have it general, but yes, I will dive deep into that. I hosted my project recently on Netlify. Difference क्या है इसमें? So अच्छा देखो, Netlify और AWS में difference मैं बताता हूँ कि अभी आज के ज़माने में you guys know there is like you can cook dinner yourselves, or you can simply bring it or order it on Zomato or Swiggy or anything like that. Or you can go to the market and buy vegetables yourself, or you can just simply do Blinkit or something like that. जो भी तुम्हारा 10-minute delivery, Zepto, जो भी है सब, all of this works. The difference between Netlify and hosting the website yourself on AWS is precisely that. If you cook the food, you are doing it on AWS yourself. You understand how it does. Netlify will also cook the food in the kitchen, the same kitchen. ठीक है? Same kitchen as in the kitchen is the same, materials are the same, gas is the same, मसाले वसाले सब same है. But वो बना के तुमको दे देगा, तुमको बस खाली बैठना है, खाना खाना है. So what you guys will do is you will just take the output from it. You don't have to worry about how it is managing my resources, how it is managing my traffic, how is it managing IP addresses and everything like that. You don't have to worry anything about it. You just create your account, you host it, you connect your GitHub repository to the account, and then whenever you update it on GitHub, the code gets rebuilt and everything happens, right? So you don't have to worry how the code is rebuilding or how is it happening automatically. You don't have to worry at all. That's Netlify for you guys. On AWS, you will see, I still here, the exact screen that I'm showing you guys, I have this automated build ready with me, but I built it. So I know what it is doing and how it is working, right? So I built it by hand. That's the one thing. It's still automating. So I'm still getting the features of Netlify, but I don't have to pay the fees to Netlify, which is a minimum of I think 120, 150, 200 per website. I have no idea about the subscription feature, but that's a minimum I think.
And for AWS, if I go and host it myself, the at max cost that I'll get is 50 rupees, and that 50 rupees is also for connecting your domain to your EC2 instance, so that whenever somebody types rishibhalla.me, point it to EC2 instance with the IP address of this connection costs 50 rupees per month. That's about like 50 rupees, 49 rupees with taxes and everything. 40 rupees ka is the service, and 9 rupees ke around is the tax and everything in free tier. So after a year you will have to pay more. That's something that you have to take care of. What about portfolio that we created earlier on Discord? Mohak, this is the same project. Okay? This is the same project that I started on Discord, and I brought it here now, because in my mind I was planning the same exact functionality since then. I had not shared the exact usage and functionality in the code, right? Ki how will we add blogs to it, and how will we edit content, how will we add content. I had not talked about anything like that, right? So that I had in the mind, because I was also not very clear about how we will do that. So that's something I wanted to first confirm, and now that I have built it, I can help you guys build it properly here. Right. Tell me, what else do we have? Or kuch doubts, something you guys want to share, say anything at all? चेयर का आवाज़ आ रहा है तुमको साथ ऐसा? चेयर का आवाज़ आ रहा है? चेयर पुरानी हो गई मेरी थोड़ी, पर अच्छा है कि मैं ऐसा टेका ले सकता हूँ भाई. हॉस्टल की चेयर बहुत ख़राब है. हॉस्टल की चेयर के बाद जब घर पे आके बैठता हूँ, आहा जन्नत. हाँ सब सुना. अच्छा दे रहा है क्या? ओह, तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई अब तो. सब सुना दे, क्लियरली दे रहा है क्या? मैं देखूंगा स्ट्रीम वापस भाई. ये तो आज फर्स्ट ही मैं पता नहीं क्या. अभी तो चलो मैं घर पे भी अकेला हूँ तो कुछ है नहीं, बट आई हैव टू मेक श्योर व्हाट ऑल हैपेंस in the stream, what all is audible and what is not. I have to make sure. कॉल आई थी क्या? तुमको सुनने में आई थी क्या? मेरी कॉल बजी थी. Did you guys hear that I had a call? एकदम क्लियर. या अब कॉल का भी साउंड आया था, क्रिस्टल क्लियर. अरे बाप रे, तुम तो डरा रहे हो यार. ऐसे बोल के डरा रहे हो यार तुम तो. अच्छा रुको, तो इसको थोड़ा सा से ऐसा, ये सही लग रहा है ना? अब मैं सही लग रहा हूँ, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ. कॉल क्या आई थी? हाँ भाई डराओ मत यार तुम लोग. तो अच्छा ठीक है, मेरे को ये बताओ कौन कौन एकदम ऐसा एक्साइटेड है अब इस चीज़ के लिए कि हम ये पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं. एंड if you guys see, I could build the whole website. Yes, wait, I have to shift it here also, no? Yes. So yeah, if you guys can see, I built the whole website in last is नहीं, version 1 action live हो गया था. wait, yes, 6 days. ठीक है, not मतलब 6 days of work. If you see the dates, 27 March I started, when I started tracking on 20th March. 7 दिन तो only that time, ठीक है, but it was day number 6, working day number 6. But I'll tell you this also, because like I had mentioned this कि this is not I was already working on on it for a month now. So I started working on it when we started the Discord sessions, and by 20th March it was already about a month. I had started earlier. I think if Discord sessions were back like 1 month back, February के end में भी started the Discord sessions ना? February के end में हमने start किया था ना Discord session? कि मार्च में किया था? कब किया था? याद है किसी को? तुम लोग पहली कब आए थे वो बता दो.
जो भी लास्ट याद आ रहा है, लास्ट मतलब फर्स्ट याद आ रहा है जो भी। तो जैसे भी चलो, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना, अगर मार्च से भी स्टार्ट हुआ तो 27 मार्च को आई फिनिश द प्रोजेक्ट, सो ऑलमोस्ट 1 मंथ। फेब एंड ना, हाँ ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ आई टुक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, राइट। नाउ वो 1 मंथ में प्रॉपर वर्किंग डेज वर 6 प्लस, आई विल से प्लस, और मतलब प्लस जाएगा, माइनस तो नहीं। तुम 4-5 days फॉर बफर, यू टेक 4-5 days फॉर बफर, ठीक है। डेट, हाँ ठीक है ना, डेट छोड़ भाई, डेट का क्या करना है मेरे को। तो 4-5 days बफर एंड 6 days प्रॉपर वर्किंग। प्रॉपर वर्किंग मतलब आई वॉज प्रॉपरली वर्किंग ऑन इट। तो अब देखो, आई एम अलोकेटिंग टाइम 3 to 5:30 ऑन संडेज एंड 5:30 या 5 to 7 और 6:37, मतलब ऐसा ही ऑन सैटरडेज। सैटरडेज को तो चलो मेरी सुबह क्लास होती है, संडेज को एवरीबडी इज फ्री। ओ माई गॉड अनुभव, वेरी गुड वेरी गुड। 25/2/2024, नाइस। ये बात हुई ना भाई अनुभव, ये बात हुई, डेट ले आए, नाइस। तो या अबाउट 12 days इफ आई काउंट, 12 days ऑफ प्रॉपर वर्क। तो 2 days वी आर वर्किंग ईच वीक, 6 weeks will take. But that's not the only case. We will have sessions in May after our exams. I can take daily, and I would love to take the sessions daily. तो मतलब अभी बीच में अप्रैल का तो चलो एक ये वीकेंड हो गया, एक वीकेंड और लेंगे, ठीक है, सो दैट वी हैव अ बेस लेवल प्रोजेक्ट रेडी, ठीक है। विल डू दैट। संडे को वील हैव अ लॉन्ग रन थ्रू, ठीक है, लॉन्ग सेशन। we'll if you guys are all okay with it, we'll extend the session, ठीक है। like ऐसा if you guys are okay, we'll have 4-5 hours का session and don't worry about it, मतलब मस्त ब्रेक वेक के साथ लेंगे आराम से। we'll have all our like टाइम पास भी करेंगे अच्छे से, ठीक है। not only working 4-5 hours completely, थक जाते हैं उसमें भी, तो we'll have proper break system and everything like that, कि हाँ ठीक है। but we'll have a long stream, that's what I'm planning next week का Sunday, if everybody is free and don't have anything else and everything is fine and if it's wanted, we'll have a long session. तो बेस तक ले आएंगे प्रोजेक्ट को एक अच्छे से। नाउ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ यू आर गुड इन फ्रंट एंड, तो आई विल स्टिक टू दोज गाइज हु आर नॉट गुड इन फ्रंट एंड। आई जस्ट गिव द पीपल हु आर गुड इन फ्रंट एंड, आई जस्ट गिव देम सम टास्क and I'll stick to people who are not that good and we'll be building it from scratch up, ठीक है। For people who are good in front end, I'll just give them the task कि ये बना दो, जैसे मर्जी अपना आपको थीम करना है करके, जिधर प्लेसमेंट करनी है I'll just say नैप बार बनाओ, जैसा मर्जी बनाना बनाओ ऐसा। I'll say कि यहाँ पे कंटेंट तुम्हारा मेन लैंडिंग पेज होना चाहिए, जैसा मर्जी बनाना है बनाओ, इट्स अप टू यू। ऐसा करके विल वर्क। एंड फॉर पीपल हु आर नॉट दैट गुड, I'll take this my very own portfolio as the template and we'll start building it from ground up. Sounds good? ठीक है, that's what we'll do. And April के end तक we'll have a base ready. ठीक है, at least home का landing page ready होना चाहिए अपना। landing page we'll make ready. ठीक है, एक क्लास मतलब एक सेशन है कल, उसके बाद में अगर तुम लोग को चाहिए तो कल भी कर सकते हो लंबा सेशन, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल, यू गाइस टेल मी। तो एक सेशन है कल, एक सेशन है फिर सैटरडे को, अगला सैटरडे, और एक संडे। 3 सेशंस वी कैन डू वेरी वेल कंप्लीट द लैंडिंग पेज। व्हाट आई मीन बाय लैंडिंग पेज इज आई विल डिवाइड दीज सेक्शंस। लैंडिंग पेज मतलब कंप्लीट ये पूरा पेज नहीं, लैंडिंग पेज मतलब सिर्फ द थिंग दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, nav bar and this single section, this is the landing page, that's it. So सिर्फ इतना बनाना है, 3 सेशंस में बहुत इजीली बन जाएगा। आई एम ओके ओके, कल के लंबे सेशन के लिए ओके है ना, हाँ ठीक है। तो एक काम करेंगे, ठीक है, आई हैव अ पोल, ठीक है, आई हैव अ पोल बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट, ओके 5 people are viewing the stream right now. I can see Anubhav, Ravi, Kumar, Mohak, who's the 5th guy? Is it me only? अच्छा कोई बात नहीं। तो अभी एटलीस्ट आई फॉर अ फैक्ट आई नो कि you 4 are going to be there every session, right? And 3 of you have said yes. Ravi, are you okay with a long session tomorrow? मेरे को अभी बता दो।
इफ़ यू आर देन तो अपन टाइम अभी डिसाइड कर लेंगे, एंड देन जिसको आना है वो कल आ जाएगा, मतलब और किसी को भी अगर आना है तो वो आ जाएगा, हम मैसेज उस तरह से फॉरवर्ड करेंगे। बताओ अभी, ठीक है। तब तक मैं जो कह रहा हूँ, ये लैंडिंग पेज हम जो देख रहे हो तुम अभी पूरा, दैट वील बिल्ड, एंड ये 3 सेशंस में वील बिल्ड दिस। अगर इससे ऊपर गए और बेटर है, मिनिमम दिस। मई में जब तुम सबके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, एक तो मेरे को ये बताओ, आई एम अप फॉर होल्डे, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द थिंग आई वांट, दिस इज द थिंग आई वांट भाई, ये जज्बा चाहिए। एंड मेरे को ये साथ साथ बता दो कि तुम्हारे एग्जाम्स कब लास्ट खत्म हो रहे हैं, वो व्हेन इज द लास्ट डेट ऑफ योर थ्योरी पेपर्स। प्रैक्टिकल्स पहले हो जाएंगे, तो थ्योरी पेपर की लास्ट डेट कब है मेरे को बताओ फटाक से। आई हैव माई लास्ट पेपर ऑन 15th, तो आफ्टर 15th एनी टाइम इज़ फाइन फॉर मी। तो उसके बाद में अपन रेगुलर सेशंस रख देंगे छुट्टियों में, सब अपने घर पे बैठे मस्त एकदम, टाइम पास भी चलेगा, लंबे सेशंस भी चलेंगे। ट्वेंटी सेवन, अच्छा ठीक है, तो 27 को तुम लोग का सबका हो रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन। 27 के बाद से वील हैव लॉन्ग सेशंस whenever हाँ वही, तो whenever you guys reach home, मतलब after 27th I mean, जब भी you guys will reach home, or if you are not going home and you have your pep classes right here, तब तो you will be free after 27th only। तो start the session from 1st June। हाँ हाँ, अरे ठीक है, देखो उस टाइम का सेशन डोंट वरी अबाउट इट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिफोर यू गाइज आर फ्री फ्रॉम योर एग्जाम्स एंड इन अ प्लेस वेर यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। नाइट में रखना अराउंड 9-10। मोहक देखो, एक चीज़ होती है ना कि 9-10 का प्रॉब्लम बस एक ही है कि सबके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, किसी किसी को जल्दी सोने की आदत होती है, तो वो एक अलग सीन हो जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि मेजॉरिटी, अगर तुम सी फॉर नाउ मेजॉरिटी फॉर मी इज विथ यू गाइज, जस्ट द 4 of you, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर पर्सन हियर टू आस्क। तो नाइट सेशंस रखने का यू गाइज हैव टू डिसाइड एंड यू गाइज हैव टू टेल मी, सिंपल। यू गाइज टेल मी नाइट सेशन रखना है, आई हैव नो इश्यूज विद इट, बट the only thing that I have is at 12 sharp I'll cut off the stream, that's it। 12 sharp I'll cut off the stream because वो मेरा सोने का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद में मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। नॉट मेमेरी नोटो, वुड वॉट, बताओ वुड वॉट। इन जनरल बोला वैसे तो यू कैन टेक द होल डे आफ्टर ईटी। हाँ सी आई अंडरस्टैंड दैट मोहक, डोंट वरी अबाउट इट, जो भी टाइम रखेंगे, जो भी चीज़ें रखेंगी, अंडरस्टैंड दिस कि अभी तुम लोग का ही मेजोरिटी है, तुम 4-5 लोग ही हो मेरे सामने। दिस इज सो स्किबिडी ओके, ये कुछ है क्या, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है स्किबिडी का? इवनिंग फ्रॉम 7 PM, हाँ हाँ डेफिनेटली गाइज, आई विल पुट अप अ पोल, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइज आर इन डिस्कॉर्ड राइट, इफ यू आर नॉट आई जस्ट सेंड द लिंक टू यू गाइज and join Discord server right now because I'll be putting up the poll there, ठीक है। what you guys have to do is, if you are not in Discord or if you are in Discord, that is server, ठीक है, कॉपी करते हैं and we'll paste it, open in web browser, हाँ। So what I'll do is I'll paste the Discord link right here. Now what I want you guys, अरे कुछ डालो यार, एक आध मैसेज उसके नीचे डालो। अच्छा नहीं हो गया हाँ ठीक है, पिन कर दिया। हाँ, सो द डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक इज़ राइट देयर, ठीक है। एंड आई थिंक इट, हाँ ठीक है, सो द डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक इज़ राइट देयर, है ना। एंड व्हाट यू गाइस आर सीइंग राइट नाउ, ओके ठीक है yep, so the Discord server link is right there in the chat. If you haven't joined, join. If you are already there, go to what do you say, off topic chats, या रुको off topic में जाएंगे, या हाँ, go to off topic chats, ठीक है, tag me, I am online, you can see the tech lead, tag me and just write a message
tagging me. I'll give you the roles and I'll add you to the curious minds wala section. ठीक है, because that's where I try to separate it so that I don't have to ping everybody who is there in the server. It's almost 70 plus people. What's your opinion on the development language? मैं बोलूँगा नहीं यार, क्योंकि ये सब मेरे को मालूम है कई बार ट्रोल करते हैं, तो आई डोंट नो अबाउट दिस लैंग्वेज कर्मा. तो I would love to hear your opinion on this, but some other time. So, what do you say? Join the Discord server, tag me, and I'll give you the roles. ठीक है, अपना नाम लिख देना साथ में. ठीक है, what tag me and write your name. What is your name? So those people who write your name will be given the roles, and we'll have that. And so that I'll tag you guys whenever we'll have the session and polls वगैरह के लिए भी. And then उसके हिसाब से we can decide कि what time to keep. So after this session ends, I'll create a poll. So make sure you tag me before that. ठीक है. And सबको दिख रहा है क्या वैसे? ऑफ टॉपिक चैट्स दिख रही है? नहीं दिख रही है तो अभी बताओ कि नहीं दिख रही है. रवि को तो दिख ही रही होगी. अनुभव एंड ऑल, you guys are new, right, in the community? You tell me, are you guys able to see it? If not, tell me right now. अनुभव, मोहक, कुमार, आयुष को भी दिख रही होगी ना. रवि, अगर तुमको वो क्यूरियस माइंड्स वाला वो दिख रहा है क्या सेक्शन नीचे? अनुभव, यू कैन सी इट राइट? हाँ तो टैग करो भाई, क्यों नहीं कर रहे? बोल रहा हूँ अभी कर दो. Already there. Mohawk is already there in the Curious Minds. Yes, nice. Mohawk is already there. And others. रवि, रिम्मी को भी बोलो टैग करे, उसको बोलो ज्वाइन करने सेशन से. सारे आई थी वो बीच में, फिर पता नहीं कहाँ चलेगी. उसको मैसेज डाल देना तुम. अनुभव इज ऑलरेडी देयर. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस. अच्छा अनुभव, हाँ यू गॉट द क्यूरियस माइंड्स का रोल पहले ना, बट डिड यू गेट योर? अच्छा ठीक है ठीक है. आई एम नॉट, आई कांट सी दैट. हाँ हाँ रवि, इसलिए मैं तुमको बोला वो डालने के लिए. क्यूरियस माइंड्स वाला ग्रुप मैंने तब वो वाला बनाया था व्हेन वी हैड द डिस्कॉर्ड सेशंस. उस टाइम पे जो रेगुलर आ रहे थे उनके साथ में. आई विल ऐड यू ऑल्सो टू इट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. तुम मेरा ये काम करो, पर उसको जाके रिम्मी को भी जाके बुलाओ क्यूरियस माइंड्स का. चेक करना रवि, तुमको अभी मिल गया होगा एक्सेस क्यूरियस माइंड्स का. यस, आई गॉट माई रोल. हाँ हाँ, नहीं नहीं, यू गॉट द क्यूरियस माइंड्स का रोल, बट वेट अ सेकेंड. ठीक है ठीक है. मोहन एंड एवरीबडी इज हियर. हाँ रिमी है ना यहाँ पे. चलो फिर डिस्कॉर्ड पे वो करो टैग. आई डोंट, हाँ तो यू डोंट, you were there in the Discord sessions that day, I remember. And I asked you guys to tag the message if you can see it. If not, tell me. You did not say also. इसमें कहाँ है रिमी गई? ये रही. चेक करो रिमी, मिला है क्यूरियस माइंड्स? एक्सेस मिल रहा है अभी? हाँ हुई. दिस इज गुड, दिस इज गुड. मैं पता है पहले ना ये, if you guys can see this, ये माइक लगाने वाला था. I had this mic for my what do you say, music.
I had this mic for music and ये पर टाइम हो गया ना इसको काफ़ी, तो इसका साउंड कम हो गया है अभी। तो अभी जो म्यूज़िक का ही है, मतलब बेसिकली आई प्ले फ्लूट, इफ़ यू गाइस डोंट नो आई प्ले फ्लूट। तो फ्लूट का साउंड इट पिक्स अप वेरी वेल, बट नॉर्मल टॉकिंग जैसा आई एम टॉकिंग राइट नाउ वो उसमें बहुत धीरे आता है। हाय फ्रॉम बीजिंग, हेलो हेलो ब्रो, हाय डेवलपमेंट, ओके आई कांट प्रोनाउंस योर फर्स्ट नेम, टिल्की। I'm sorry if I'm wrong in the pronunciation, but hi Tilki, Tilki. रिमी आपने बताया नहीं, डिड यू गेट द एक्सेस? चेक द सेक्शन, बजा कर दिखाओ। अरे अच्छा ठीक है, फ्लूट भी बजा के दिखाएंगे, इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक। अभी मेरे पास है नहीं, अभी लाया नहीं हूँ मैं, हॉस्टल में पड़ी है। नेक्स्ट वीक लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीक वो भी करेंगे। लॉन्ग सेशंस जब होंगे ना, मतलब कल वाला नहीं, बट व्हेन वी हैव द लॉन्ग सेशन नेक्स्ट वीक, उसमें अच्छा सा वो टाइम भी रखूँगा, ठीक है? तुम लोग को अच्छा भी लगेगा। तो यार आप ओके कंफर्म कर दो, ठीक है? रवि, मोहक, अनुभव, रिमी, कुमार, आयुष, ऑल ऑफ यू हैव क्यूरियस माइंड्स का रोल और नॉट? सेंड वन वन मैसेज ईच। टेल मी। मोहक हैज इट, ये रवि हैज इट, रिमी, अरे रिमी चेक करो ना आपके सेक्शन में, मैंने दे दिया तुमको एक्सेस। गो टू द चैनल्स ऑफ डिस्कॉर्ड सर्वर AWS। रुको, I'll tag you, wait. I'll tag. Did you get the notification? Anubhav has it. रिमी चेक करो, नोटिफिकेशन आया? वो चैनल देखो कहाँ पर है, नीचे है एकदम लास्ट में, क्यूरियस माइंड्स का। आई हैव, ओके ठीक है, कुमार आयुष हैज। नाइस, रिमी ऑल्सो गॉट इट राइट, ठीक है। तो नाउ ऑल ऑफ यू हैव इट, आई हैव वन, रिमी, रवि, आयुष, अनुभव और मोहक, 5 पीपल, ठीक है? 5 पीपल, आई विल पुट अप अ पोल, ठीक है? आई विल पुट अप अ पोल अभी जस्ट स्ट्रीम के बाद, इंस्टेंटली अभी ही रिस्पॉन्ड कर देना, ताकि वी हैव अ प्रॉपर फिक्स टाइम फॉर टुमारो, एंड आई अकॉर्डिंगली आई विल मेक द कंटेंट, मैसेजेस एंड वॉट नॉट, एंड सेंड इट whoever wants to join, ठीक है ना? अभी ही सेशन के बाद मैं बता रहा हूँ, अभी ही कर देना। 5 रिस्पॉन्स चाहिए मुझे पोल पे। मैं सीधा क्यूरियस माइंड्स को टैग करूँगा, अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लो डिस्कॉर्ड की, और सर्वर्स को म्यूट कर दो बाकी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। I'll टेल यू दिस, आई वोंट स्पैम यू विद मैसेजेस, ठीक है? आई विल ओनली टैग व्हेन इट इज़ नीडेड, ठीक है? आई विल ओनली टैग व्हेन इट इज़ नीडेड। तो पर उतना तुम लोग ऑन करके रख लो, ताकि यू गाइज गेट द नोटिफिकेशन कि हाँ द सेशन इज स्टार्टिंग, एवरीवन, ठीक है? लाइक ओके, लेट मी डू वन थिंग, आई विल स्टार्ट इट राइट नाउ ओनली, पोल व्हाट टाइम एंड एज आई एम पुटिंग द पोल राइट नाउ ओनली, अभी कर देना पाँचों के पाँचों, ठीक है? एंड आई विल टेल यू दिस कि माई एंडिंग टाइम फॉर टुमारो विल बी 4:30 बिकॉज आई हैव टू गो बैक टू कॉलेज अगेन, ठीक है? तो 4:30 आई विल पैक इट अप, आई हैव टू गो।
4:30 को स्ट्रीम बंद हो जाएगा, तो उस हिसाब से टेल मी व्हाट टाइम कैन यू गाइज स्टार्ट। तो ऐसा नहीं, ठीक है। मैं पोल ही वैसा बनाता हूँ अभी इसमें। वी कैन वन कैन वी स्टार्ट, कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 PM और PM और 3 हाँ 3 PM एज द नॉर्मल स्टार्टिंग टाइम। पोस्ट @ गाइस मैंने डाल दिया है पोल, अभी के अभी रिस्पॉन्ड करो एवरीबडी, ठीक है। एवरीबडी रिस्पॉन्ड राइट नाउ। 4:30 we have to end, remember that. Two people have only voted. Guys, what is this? Where are you guys? प्लीज़ गिव मी वेब डेव टीम रोल। हाँ मैं वही तो तुमको पूछने लगा था कि तुम्हारे पास है ही नहीं वो। Here you go. You have it now. अरे वोट करो भाई, वो वाला वोटेड। मोहक, रवि एंड अनुभव है वोटेड ओनली। चलो 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 चलो। रिमी इज लेफ्ट, कुमार आयुष इज लेफ्ट। वेर आर यू गाइस? क्विक क्विक क्विक। वैसे तो अपने पास आ गई है वैसे मेजोरिटी 12 बजे की, पर मुझे ये बताओ कि उससे लेट चाहिए क्या किसी को? पहले चाहिए तो 12 बजे करेंगे, लेटेस्ट टाइम बताओ मुझे। दोनों क्या? व्हाट डू मीन बाय दोनों आयुष? यप आई गॉट, हाँ नाइस। आयुष व्हाट डू यू मीन बाय दोनों? दोनों क्या है? मैंने कुछ तो बोला होगा यार, मैं भूल गया हूँ। कुछ पूछा होगा अगर मैंने तो। पोल पे रिस्पॉन्ड करो फटाफट। कितना पीछे चल रही स्ट्रीम? हाँ वेर इज द स्ट्रीम, वेर इज द स्ट्रीम? स्ट्रीम इज़ नॉट दैट लैगी यार गाइस, कम ऑन। लैगी मतलब इतना लेटेंसी नहीं है स्ट्रीम में। डन व्हाट? आई कैन नॉट सी योर व्हाट। कुमार आयुष, आई कैन नॉट सी योर व्हाट। तुमको दिख रहा है ना आयुष? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? I still have 3 votes or what? I cannot see it. Where have you voted?
Guys, can you see it? I can't. आयुष, आयुष देखो भाई, सेलेक्ट करके वोट पे क्लिक करना है ना, सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना है आयुष, वोट पे क्लिक भी करना है. रिमी कहाँ है अभी? चलो ठीक है यार. ओके, वी वी हैव 4 पीपल और 5. चलो 5. वी विल स्टार्ट टुमारो एट 12. ठीक है, आई विल नॉट स्ट्रेच दिस आउट एनी मोर. ठीक है, टुमारो एट 12 है ना गाइस? लेट्स यस. सो अरे यार मेरे को अपनी आवाज़ आई जा रही है. नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, आई लव माई वॉइस, बट इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग बिकॉज आई लव इट. सो टुमारो एट 12. ठीक है, 12 o'clock वी स्टार्ट द स्ट्रीम. अभी से मैं उसका लिंक विंक बना के डाल दूँगा. 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी. एंड समथिंग वेंट रॉन्ग, डिड नॉट फाउंड. चल ठीक है, कोई बात नहीं. 12 बजे कर रहे हो ना? 12 बजे कर रहे हो, 12 बजे करेंगे. ठीक है, नो इश्यूज़ नाउ. 12 o'clock आई विल सेंड इन द मैसेजेस एंड आई वॉन्ट यू गाइज ऑल टू शेयर द मैसेजेस. ठीक है, जितने को सी आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट पुट इट. whoever wants to join will join. No need to follow up on anybody at all. ठीक है, whoever wants to join will join, whoever don't wants to join will not join. तो let them be. ठीक है, तो अगेन 12 बजे कल सब लोग एक काम करके आएंगे. इफ़ यू डोंट हैव इट, सेट अप नोड एंड npm इन योर डिवाइस. ठीक है, नोड एंड npm इज़ अ मस्ट. नोड एंड npm, हाँ, दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड फॉर टुमारो. ठीक है, टुमारो विल सेट अप द प्रोजेक्ट एंड विल स्टार्ट विद एंड गिटहब अकाउंट होना चाहिए. दैट्स, आई शुड नॉट से दैट. हाँ, डेफिनेटली पुट इट वेर एवर यू गाइज वॉन्ट. ठीक है, ट्राई टू गेट एज मेनी ऑडियंसेस फॉर दिस एज यू कैन. नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आई वुड लव टू हैव जस्ट you 5 पीपल ऑल्सो. ठीक है ना, कोई उसका मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. एक बंदा भी आएगा तो भी चलेगा. आई विल कीप द स्ट्रीम फॉर देम. मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ. अगर तुम लोग को मेहनत चाहिए तो तुम लोग सामने से, इफ़ यू आर रेडी टू कोऑपरेट, आई एम देयर. बन ना, हाँ, येस, आई हैव ट्राइड बन. मैं जब उसका एकदम न्यूएस्ट रिलीज आया था, व्हेन इट स्टार्टेड अनाउंसिंग कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड बन इनकमिंग, आई ट्राइड इट. एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे तो इट वाज अंडर डेवलपमेंट, सो आई फेस्ड मोर प्रॉब्लम्स विद बन, सो आई जस्ट शिफ्टेड बैक टू नोड. बट नाउ आई नो उनका 1.0 आ गया ना, मतलब फर्स्ट रिलीज आ गई है उसकी. तो लेट्स सी, आई विल डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट अगेन. उसका भी कुछ करेंगे, बन से भी कुछ करेंगे. तो वो भी ज़रूर देखेंगे. इस प्रोजेक्ट में नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अपन एक तरफ पहले लोगों को लेके आके एक जगह सेट करने दो, उसके बाद लेट देम गो. पहला स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट. आई एम यूजिंग बन राइट नाउ. इट इज़ सो, हाँ, एग्जैक्टली आई नो. इट वॉज एक्चुअली वेरी कूल व्हेन इट स्टार्टेड ऑल्सो. जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब जो उसकी बीटा रिलीजेस आई थी ना, वो तब से बहुत कूल है. मैं तब से देख रहा हूँ उसको. एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग मैन. तुम लोग चाहे ट्राई मत करो. इफ़ यू गाइज आर हियर लिसनिंग, इफ़ यू डोंट वांट टू ट्राई इट, डोंट वरी, डोंट गेट confused with it. At least read about what bun does. ठीक है, bun is a package manager. ठीक है, just like node, it's a package manager. bun package manager search कर लो गूगल पे and you will get it. ठीक है, it's a runtime environment, like it's completely a replacement for node. That's what they are doing. सब node का अच्छा, हाँ, नोड का मन नहीं करता, मैं समझ रहा हूँ रवि. तो एक काम कर लो, चलो. सी, I am not stopping you guys from using anything or doing anything that you want on your end. Use bun, whatever you want to use it. I have no issues. हाँ, उसमें
what we'll do is whenever you have a doubt and you are not able to solve it, you will have to wait for little bit of time, जब तक मैं बाकियों का नोड रिलेटेड चीज़ सॉल्व कर दूंगा, उसका बाद अपन बन पे बैठेंगे और तुम्हारा डाउट्स भी ले लेंगे. तो बस उसमें हल्का सा डिले आएगा तुमको अगर कोई डाउट आता है तो. बाकी तो आई वुड लव टू सी इफ यू मेक द वेबसाइट विद द लाइक यूज बन फॉर द वेबसाइट एज वेल. आई वुड लव टू सी दैट. नो इशूज़ एट ऑल, नो इशूज़ एट ऑल. ठीक है. जिनको नहीं आइडिया है एंड थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं भाई ये तो नोड नहीं पता, बन कहाँ से सीखें वगैरह, डोंट वरी, हम नोड में करेंगे, ईजी करेंगे. सबसे ईजीएस्ट चीज़ मैं बताऊंगा तुमको, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. मैं अभी टाइपस्क्रिप्ट में भी नहीं लेके जाऊंगा तुम लोगों को. ऑल्दो यू आर वेलकम टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, आई हैव यूज टाइपस्क्रिप्ट, आई वॉन्टेड टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट. ठीक है. बट आई विल स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट विद यू गाइज, whoever does not feel comfortable, because टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने में आई विल बी ऑनेस्ट मेरा दिमाग भी बहुत ख़राब हुआ कि यहाँ का टाइप वहाँ का टाइप, इतना ये वो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड उसमें वार्निंग भी एरर जैसे आती है. जो वार्निंग्स होती हैं ऑल्सो दे ऑल्सो कम एज एरर्स. सो इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक फॉर अ न्यू बिगिनर. तो वील ओनली यूज जावास्क्रिप्ट फॉर नाउ विथ नोड. You guys can use whatever tech stack you want. I have no issues with that. If everybody is using different tech stack, then we'll think of something that can collaborate. Like we can all build. I'll still not stop you guys from using any other tech stack as well. If you want to build it in pure HTML, CSS, JavaScript, up to you. I would still strongly recommend to learn a stack rather than HTML, CSS, JavaScript. क्योंकि वहाँ पे comfortable हो गए तो मर जाओगे. AI की रेस में सबसे पहले तुम ही मरोगे, क्योंकि सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, तो सबसे पहले मरोगे. हाँ, टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ पेन टू स्टार्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट. उसके ऊपर से यू शुड हैव अ हैंड इन स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस लाइक C++ जैसे, विच आर स्ट्रांगली टाइप्ड. यू नीड प्रॉपर डेटा टाइप्स टू मेंशन देयर. जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक लेट लगा दिया, एक वो कॉन्स्ट लगा दिया, डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं, बस बढ़ जाओगे. कोई भी डेटा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है. तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, जो कि हम वहाँ से हट के टाइपस्क्रिप्ट पे इसलिए जाते हैं टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ कोड. नॉट सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बट सिक्योरिटी ऑफ कोड. कि मैं रैंडमली एक काउंट वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि काउंट वेरिएबल को मैंने टाइप दे दिया है कि इंट ही होना चाहिए वो. तो मेरा कोड लिखते समय का सिक्योरिटी आ जाता है कि हाँ मैं गलती से कोई बग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ जो कि गलत टाइप की वजह से है. राइट. सो दैट इज़ वो टाइपस्क्रिप्ट इज. इसलिए वो ट्रबल हो जाती है स्टार्ट में लर्न करने से, अगर तुम बिगिनिंग में स्टार्ट कर दो टाइपस्क्रिप्ट सीखना. तो अभी टाइपस्क्रिप्ट नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट, नोड, रिएक्ट, एक्सप्रेस एंड मर्न स्टैक, बेसिकली मोंगो. मर्न स्टैक हम पूरा करेंगे अभी के लिए इसमें. राइट. ऑल सेट. सो पटाखे बज गए हैं, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है. तो वील हैव द सेशन एट 12 टुमारो. आई विल सेंड द मैसेजेस रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू स्प्रेड इट लाइक वाइल्ड फायर एंड लेट्स बी ऑन टाइम टुमारो. ठीक है. चलो, आई विल मीट यू गाइज टुमारो. बाय बाय.